Hello students, welcome to Saran's Biology. We are discussing from the syllabus of class 10th, chapter number 6, life processes. Up till now, we have talked about two important life processes. One was nutrition, covering autotrophic nutrition as well as heterotrophic nutrition. Then the process that ensures release of energy from the food molecule, and that was respiration. Today, we shall see in all these processes, lot of movement of substance is needed from one place to another. Let it be digestion, let it be respiration, there is movement of gases, there are movement of substances, absorption of food and its movement. It involves one of the most interesting system that we call as transportation system. Though animals have got well-defined transportation system, especially human, but plant has got transportation through complex permanent tissue, xylem or phloem. Today we'll be talking about human transportation system and also in brief about transportation in plants. So, first and foremost question, what is the need of transportation? In our society, every place is connected by transportation, whether it's supply of essentials or transportation of people from one place to another or taking of the waste materials. Similarly, in our body also, metabolism produces lot of waste as well as it needs lot of raw material. It needs enzymes. So it also needs some additional factors that needs to be transported from one place to another. And as you know, multicellular organism has complexity of body design. So there is a constant need for movement of nutrients, gases, enzymes, waste product from one place to another. एनिमल्स में आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक इलेबोरेट सिस्टम है, जबकि प्लांट्स में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो वास्कुलर टिश्यूज हैं वही ट्रांसपोर्टेशन को एक्सपेडाइट करते हैं. लेट अस बिगिन विद ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. तो इससे पहले हम पढ़े, I am very sure that you have got this basic idea. In human being, the transportation system is made up of a muscular heart, which is just like a pump. Human being में transportation is closed type. अब closed type और open type थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. अगर movement of circulatory fluid एक फिक्स ट्यूब्स में हो, जैसे आर्टरीज और वेन्स, तो हम उसे कहेंगे क्लोज्ड टाइप. जबकि यदि बॉडी कैविटी में साइनसेस हो और वहां पे सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड जमा हो और सारे एक्सचेंज वहीं पे हो, कोई आर्टरीज और वेन्स नहीं हो, उसे हम ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. क्लास 9th में आपने पढ़ा था आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन पाया जाता है, जबकि दूसरे फाइलम में क्लोज टाइप, एज फॉर एग्जाम्पल एनालिडा. हालांकि ह्यूमंस आर अ केस ऑफ एडवांस एनिमल्स, सो वी हैव गॉट क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. सो मस्कुलर हार्ट, ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स. अब उनमें ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स में आपके पास दो तरह की वेसल्स होंगी, इनफैक्ट 3 टाइप्स ऑफ वेसल्स. आर्टरीज, वो वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. अदर वन इज वेन, एंड द थर्ड टाइप विच विल रीड फर्दर is the one which is formed by division of arteries, that is called as capillaries. Then the circulating fluid. We will read about two fluids, blood, which is the fluid connective tissue, and also about the lymph, which is also the extracellular fluid. So the muscular heart, the vessels, the component of the blood, and even the lymph. Lymph is also called as extracellular fluid or tissue fluid. Let's begin with the human heart, the pump. It is a wonderful organ. As you can find out, human heart is a 4-chambered structure. इसमें 4 chambers हैं और ये चारों chambers में से upper 2 chambers are the collecting chambers and they are called as atrium. You can find here out right side, right atrium, and the other collecting chamber, which is the left atrium. The walls of these atrium are thinner as compared to the other chambers. Then we have got 2 pumping chamber, right ventricle and the left ventricle. If you see,
right atrium leads to right ventricle through a aperture which is called as right auriculoventricular aperture, और ये aperture guarded होता है एक valve से जिसमें 3 cusps होते हैं, उसे हम tricuspid valve बोलेंगे. Then after लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल तक जाने के लिए एक अपर्चर यूज करती है जिसे हम लेफ्ट ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर अपर्चर कहते हैं, और वो अपर्चर गार्डेड होता है एक वाल्व से जिसे आप कहते हैं मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर बाइकस्पिड, बाईं ओर बाइकस्पिड. ऐसे भी याद रख सकते हैं. राइट हैज गॉट मोर अल्फाबेट्स RIGST, so it will have 3 cusps. Left only 4 alphabet, it will have 2 cusps. Then अभी जो ब्लड कलेक्ट होकर आई, दैट इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इट इज सेंट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. सो एनी वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दैट इज कॉल्ड एज आर्टरी. हियर इन दिस केस द ब्लड इज कैरिड टू द लंग्स, सो इट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लंग्स तक ले जाएगी, एंड दिस इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड. द ब्लड गेट्स ऑक्सीजनेटेड, व्हाट वी हैव सीन इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, और वहां से pulmonary vein, because the vessel that carries blood towards the heart from the body, they are called as vein. Pulmonary vein उसे वापस लेके आएगी and it will drain into the left atrium. Left atrium से blood will move to the left ventricle, and left ventricle will now pump the blood into the aorta. Right? So आपने देखा कि ब्लड का सर्कुलेशन और फ्लो कैसा है, हम इसके बारे में और देखेंगे. बहरहाल आप याद रखिए, द पंपिंग चेंबर्स आर थिकर वॉल्ड. अब यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल ज्यादा थिक है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल, व्हाई? थिंक अबाउट इट. आई थिंक सम ऑफ यू हैव गॉट इट राइट. बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप. यहां से राइट वेंट्रिकल से ब्लड को सिर्फ लंग्स तक पंप करना होता है, so it needs some amount of work to be done. That's why it is thicker. But left ventricle has to pump the blood throughout the body, so it needs more work to be done. Hence, it is more thicker than right ventricle. But overall, ventricles are thicker than the atrium. आप देखें यहां पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व, यानी जो पल्मोनरी आर्टरी है वहां भी you will find some valve जो it is just like half moon, so it is called a semilunar valve. Same in the aorta. और आप देखें इन आर्टरीज में प्रेशर ऑफ द ब्लड विल बी वेरी वेरी हाई, क्योंकि सीधे सीधे पंप से इन ट्यूब्स में जा रही हैं. हार्ट के अगर वॉल को देखा जाए, इट इज अ 3 वॉल्ड स्ट्रक्चर. सबसे बाहरी वाला वॉल दैट इज पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम भी 2 लेयर का बना होता है और उसके अंदर में फ्लूइड होती है जिसे आप कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. It acts as a shock absorber. हर इंपॉर्टेंट ऑर्गन बाहरी कवरिंग 2 डबल मेम्ब्रेन होंगी. जैसे प्लूरा में आपने देखा 2 प्लूरल मेम्ब्रेन. उसके बाद मस्कुलर लेयर विच इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम, एंड द इनर मोस्ट इज कॉल्ड एज एंडोकार्डियम. आप यहां याद रख लीजिए, द ग्रेटेस्ट आर्टरी इज एओर्टा एंड द ग्रेटेस्ट वेन इज वेना cava. Now we talk about the vessels. The 2 vessels, what we have mentioned earlier, arteries. The one that takes blood from heart to body. A alphabet, बाहर जाने के लिए you can find the sign, away symbol. And veins are the one that carries the blood towards the heart. Capillaries, the vessels where arteries and veins meet. So capillaries are important because it forms connection between arteries and vein. And they are just single cell thick. Hence, it is very important in exchange of material. Respiration में आपने देखा alveoli is covered with arteries. और चूंकि ये single cell thick है तो diffusion of gas was faster. अब देखिए, अगर आप डिफरेंस की बात करें तो arteries are thick walled. क्यों? क्योंकि they receive blood from the heart. If it is thin walled, it may get burst. So the pressure is very very high. To counter the pressure, जो आर्टरी की मिडल लेयर है जिसको आप ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, दैट इज द थिकेस्ट वन. बाहरी लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना, अंदर लेयर ट्यूनिका इंटीमा.
In case of veins, you'll find few more structural changes. Veins, the middle layer is thinner क्योंकि it has to return the blood, but चूंकि इसमें कोई पंप नहीं है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बैकफ्लो ऑफ ब्लड ना हो. उसके लिए विल फाइंड valves present in the veins ताकि backflow ना हो. So the veins are thin walled and have valves. These are two important differences that you need to take account of. So arteries, veins को आप differentiate कर सकते हैं. Questions अक्सर पूछे जाते हैं. So arteries carries blood from heart, carries oxygenated blood. There is some exception. We'll rediscover these exceptions. For now, you can remember it is the pulmonary artery. Veins carries blood to the heart from the body. They are generally carry deoxygenated blood, but there is also exception, except pulmonary vein. The oxygenated blood is bright red in color, and the normal blood is dark red in color. The walls of arteries are elastic and thick-walled, whereas that of vein is thin-walled and less elastic. There is no valve in the arteries. Why? Because it receives blood at high pressure. So, it does not have to worry about the backflow. जबकि valve में body से blood वापस heart तक आती है, तो there are chances of backflow to prevent that valves are present. You can feel the pulse. Pulse in case of arteries. आपने देखा होगा यहाँ पे इस radial artery में pulse feel करते हैं डॉक्टर अक्सर. So that is important. And you find here out arteries divide करती हैं, बनाती हैं arteriole, और which further divide to form capillaries, और ये यूनाइट करके बनाती है वेनियोल, जो फर्दर बनाती है वेन्स. अब यहां एक और छोटी सी बात का ध्यान रख लेते हैं. हार्ट के फंक्शनिंग में जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टोल. आप बोल के देखें, सिस्टोल. योर माउथ विल गो स्मॉलर. सिस्टोल. एंड व्हेन हार्ट रिलैक्सेस, द प्रेशर विल बिकम लेस. Why? Because more volume, less pressure. And that is called as diastole. You talk about diastole. अगर एक बार बोल कर देखें, diastole, माउथ का साइज बड़ा होता है. Hence, heart relax, diastole, so pressure will be less. Heart contracts, systole, the pressure will be more. Accordingly, in arteries, the pressure is felt. और blood pressure के बारे में सबने सुना होगा. So, ये pressure generally systolic pressure by diastolic pressure के रूप में मेजर किया जाता है, and which comes to be 120 millimeter of mercury is the systolic, the contraction pressure, and 80 millimeter of mercury, that's the diastolic pressure. So एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे इसे मेजर किया जाता है, and आप सभी ने देखा होगा, which is called as sphygmomanometer. Sphygmomanometer, आप स्पेलिंग को ध्यान से देख लीजिए. SPHYGMO, sphygmo, mano, MANO, METER, manometer. The pressure is measured. In case of physics, you must have read or seen this apparatus, right? This is a digital model available. Like earlier we had this model, right? Mercury containing one. So, यदि blood pressure में कोई alteration आता, change आता, तो हम कैसे interpret करेंगे? अगर blood pressure is in the range of 120 and 80 upper limit, it is called as normal. अगर ये 90/60 हो, यानी 90 is going to be the systolic and 60 is going to be diastolic, you can call low blood pressure or hypotension. अक्सर देखा जाता है growing age के साथ में, because of dietary habits and lifestyle disorder, high blood pressure की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि arteries, because of fooding habit, cholesterol deposition increases. और यदि किसी पाइप के ल्यूमन को आप पतला कर दें, तो प्रेशर ऑफ द फ्लूइड विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. गार्डन में आपने देखा होगा, अगर आप उस पाइप का इस्तेमाल करते हैं वाटर करने के लिए, अगर पाइप के माउथ को आप कवर कर दें फिंगर से, यू विल फाइंड द प्रेशर ऑफ द वाटर इंक्रीजेस. सो इफ द बीपी इज 140/100, 90, इट इज प्री हाइपरटेंसिव. 160/100, इट इज हाइपरटेंशन. और अगर ये 180+/120+ है, इट इज एब्सोल्युटली अलार्मिंग. दिस हैज गॉट बैड इम्पैक्ट. It can lead to problems like stroke, loss of vision, heart failure, heart attack, renal diseases, and even sexual dysfunction. There are some food which can help you maintain the blood pressure. बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके घर में अगर पेशेंट हैं तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं. Take oatmeal, leafy vegetables. Garlic is a wonderful
material that reduces your blood pressure. Fish, flaxseed, dark chocolate, pistachio, sweet potato, pomegranates, whole grains, avocado, berries, bananas, hibiscus, sunflower seed, and beets. Meditation and yoga also helps in controlling your blood pressure. Now we talk about the fluid. The fluid flowing, we have seen about the pump. हमने देखा heart के बारे में. We have also seen about the vessels, arteries, veins, and capillaries. Now we see about the fluid. So blood, we'll see first about the blood. What are the components of blood? Blood की बात करें, blood has got two major components, plasma and formed element. Plasma is 55% and formed element is 45%. Plasma mainly contains water, iron, protein, nutrients, waste and gases. जबकि formed element has got RBC, WBC and platelet. उसमें से भी around 44% is RBC and 1% includes white blood cell and platelets. So blood is a fluid connective tissue. और प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट के परसेंटेज आपने नोट कर लिए होंगे. फॉर्म्ड एलिमेंट, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स. लगे हाथों थोड़ा सा उनके फंक्शन के बारे में बात कर ले. रेड ब्लड सेल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. आपने देखा रेड ब्लड सेल्स does not have nucleus, does not have cell organelle. It is packed with hemoglobin, an iron containing molecule. It's a pigment that is important for transport of gases. यहां आप एक और बात ध्यान रखें, रेड ब्लड सेल्स में रेस्पिरेशन कभी भी एरोबिक नहीं हो सकता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो माइटोकॉन्ड्रिया. ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्लाज्मा कंटेन्स लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इनफैक्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन दैट इज आल्सो डन बाय द blood. WBCs, the component present in the blood that helps in defense mechanism. They are the natural warriors. Platelets, the third component, it is helping in blood clotting. अगर इन वेसल्स में कहीं कोई लीकेज, कोई पंक्चर हो जाती है तो प्लेटलेट उसे प्लग कर देती है. So this is the basic function of the fluid. Now we talk about the other one, the lymph, which is called as extracellular fluid. आपने देखा arteries breaks into arterioles and arterioles into capillaries. So certain amount of fluid is filtered out of this capillary and that is called as lymph or extracellular fluid. It is similar to plasma, but it is colorless with lesser protein. It is drained back to the vein only. यानी ये सीधे सीधे अगर बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा, it's a slow process though, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ब्लड वॉल्यूम लॉस हो सकता है, तो ये वापस से फिर वेन्स में भेज दी जाती है थ्रू स्पेशलाइज्ड वेसल, जिनको आप कहते हैं लिम्फ वेसल. लिम्फ का फंक्शन अगर देखें, यहां पे हम कंपेयर करेंगे ब्लड और लिम्फ को. इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब्ड फैट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन. डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट को आपने ध्यान से देखा होगा, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज इज अब्सॉर्ब डायरेक्टली बाय ब्लड कैपिलरीज, जबकि fatty acid and glycerol being larger in size, they are not absorbed by the capillaries. So there we need the help of lymphatic vessels. The smaller vessels are called as lacteals. It drains excess fluid from the intracellular spaces back to the blood. अब जरा एक बार देखने की कोशिश करें blood और lymph का difference. Blood is reddish in color because of presence of RBC and also hemoglobin in it. Lymph is pale yellow in color. Red blood cells are present, obviously in lymph it is absent. The flow of blood is bidirectional, whether it is the veins or it is arteries, it is flowing there. But the flow of lymph is only in the veins. The flow is rapid in case of blood, it is slow in case of lymph. The count of leukocytes is relatively less in case of blood, but more leukocytes are found accumulated in case of the lymph. Platelets are present in blood, it is absent in the lymph. These points are important. You can write it down so that you may answer the questions based on these information. Now briefly we'll see the functioning of the heart. आप देखिए आखिर होता क्या है. This dot, this blue dot is representing the deoxygenated blood from the vena cava, the upper and lower vena cava. The vena cava superior and inferior that gets the blood from the body और इसे वो पहुंचाती है राइट एट्रियम में, which is the first collecting chamber, thin wall.
राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जाने का रास्ता जो है वो राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर है, जो कि गार्डेड है ट्राइकस्पिड वाल्व से. सो नाउ द ब्लड मूव्स टू राइट वेंट्रिकल. इट इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड. अब यहां से ऑक्सीजनेशन के लिए जो भेजने का काम है दैट विल टेक प्लेस. सो इट हैज टू सेंड ब्लड टू lungs through pulmonary arteries. You find here out through pulmonary arteries, it is moved to the lungs. और lungs में oxygenation के बाद you see the color changes here out, indicating now oxygenation has taken place. It is given back to the heart, back through pulmonary veins, और वहां से through left auricular ventricular aperture, which is guided by mitral valve, the blood comes to the left ventricle, और left ventricle से aorta के through ये पूरी body को supply की जाती है. This is the circulation of the blood. This is the course of circulation that you need to remember. So, working of heart is very, very clear. Blood coming to the atrium, moving to right ventricle through a tricuspid valve. Then it is sent for oxygenation through pulmonary artery. Here, what I have asked you. Generally, artery carries oxygenated blood. But आपने देखा pulmonary artery is carrying deoxygenated blood. ऑक्सीडेशन के बाद लंग से द ब्लड कम्स बैक टू द लेफ्ट एट्रियम एंड इट इज थ्रू pulmonary vein. So vein generally carry deoxygenated blood. Here it is carrying oxygenated blood. So these exceptions are very, very important. Left atrium से blood is sent to left ventricle through left auricular ventricular aperture, which is guided by bicuspid valve और mitral valve. यहां कुछ और खास बात करेंगे. आप देखिए blood moves into the heart twice in one complete cycle. एक बार body से heart and then heart से body, and second time you find heart to lungs and lungs to heart. So it gives a figure 8 like structure. So there is a term used for this which is called as double circuit circulation. I have already explained the circulation of blood in the human body. So double circuit circulation, what does it mean? Why it is important? In a complete cycle, the blood moves through the heart twice. Once blood moves from body to heart and then back to body. This is called as systemic circulation. Whereas the deoxygenated blood has to be sent for oxygenation, और वो कहाँ भेजा जाएगा? Lungs में, और lungs से फिर वापस heart में. So this circulation involves lungs, hence it is called as pulmonary circulation. Double circuit circulation is very, very important. Why it is important? It maintains constant body temperature and efficient supply of oxygen. Hence, organism is more efficient. Here, the diagram shows the scheme of circulation in various group of vertebrates. Fishes में देखिए, heart is two-chambered, atrium and ventricle, single one. So, body sends the blood to atrium, it goes to the ventricle and back again. So there is a complete mixing. In case of frog, it is three-chambered, two atrium, one ventricle. Still mixing is taking place. यहाँ भी mixing हो रहा है. In case of reptile, दो atrium और incompletely divided ventricle है. So generally the mixing takes place in the ventricle. So यहाँ भी mixing हो पा रही है. But एक exception और ध्यान में रख लीजिए. Crocodile is also a reptile. Crocodile का heart four-chambered है, yet it is cold-blooded. Find out the reason or ask in comment. I'll explain it again. That's an exception. Four-chambered, but mixing of blood takes place. Hence, it is called as cold-blooded. So, what do we mean by cold-blooded? The organism whose body temperature depends on the external temperature. It varies with external temperature. Hence, it is called as cold-blooded. Birds and mammals being more advanced, they can maintain a constant body temperature irrespective of the surrounding. That is called, they are called as warm-blooded animals. So there is double circuit circulation, complete separation of oxygenated and deoxygenated blood. Now let us see the transportation in plants. Plants transportation takes place through permanent tissues, complex permanent tissue, xylem and phloem. Xylem is made up of mostly dead elements, whereas phloem has got mostly living element. So you'll find here out xylem, the structure you might have seen, the root xylem, stem xylem and leaf xylem. They're interconnected just like the pipe network to form a continuous pipe. Or leaf has got some tiny pore called as
stomata. There is a loss of water vapor from stomata, which is called as transpiration. When this transpiration takes place, it exerts a pull. और उस पुल के कारण आप देखेंगे कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो धीरे धीरे ऊपर चली जाएगी. इसको समझने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल ले लीजिए. सॉइल वाटर मॉलिक्यूल कहाँ जो स्टोर करती है उसे हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर. हाइग्रोस्कोपिक वाटर. सो इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर्स एंड देन मूव टू द जाइलम, एंड जाइलम से सक्शन प्रेशर के कारण ये पहुंच जाती हैं लीफ तक. In case of phloem, which is present in the leaf and the whole plant body also, the movement takes place from lower concentration to higher concentration. क्योंकि already leaf में glucose है, but glucose जो form हुई है, that is moving inside the cells. तो against concentration gradient, the movement needs energy, and that is called as active transport. So, आप देखें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, कोई एटीपी एक्सपेंडिचर नहीं है. नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा. इट टेक्स प्लेस बाय जाइलम टिश्यूज. और यहाँ पे बेसिकली रूट सेल्स आयंस लेंगे सॉइल से, जिससे कि एक सेल जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है और वाटर कॉलम जो होगा अब्सॉर्ब होगा रूट हेयर के द्वारा. देन दिस वाटर कॉलम इज पुल्ड अप बाय द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, राइट. और इसमें मदद करती है ट्रांसपिरेशन जो सक्शन प्रेशर क्रिएट करती है. In case of food, it needs ATP expenditure. It takes place in the phloem tissue. The movement of prepared food is called as translocation, long distance movement. Food from the leaves is transferred to the xylem by energy of ATP molecule. Right? So it is not xylem, it is actually phloem. Make corrections. Due to osmotic pressure, water enters the phloem and helps in the transport of food. So it's more or less an active process. So this is how the movement of substance takes place in case of plant. I am very sure you would have now comprehended how the substance moves in organism. So keep reading, ask your doubts in the comments, and you can consider subscribing the channel as well, so that you get notified for the further video. We'll have a special video at the end of the chapter that will cover MCQ based on the chapter, that will help you to prepare for your term 1 examination as given by the board. So please read the topic and tune in with us. Till then, happy reading, healthy stay. Students, keep ahead of your friend by subscribing the channel and hit the bell icon to get notified if there is a new video coming your way.